Almost all of you might be familiar with the term iceberg in the context of an ocean, and you might have heard about one of the most celebrated movies, which is Titanic, where a ship strikes against an iceberg. But today I'm going to discuss the term iceberg in a kind of different context, and hope you will enjoy listening to it. तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आसान लिटरेचर की दुनिया में आपको वेलकम करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो ऐसे थोड़ी होता है भाई, एटलीस्ट सब्सक्राइब करना तो बनता है। The iceberg theory or theory of omission is a writing technique coined by an American writer Ernest Hemingway. इसका पूरा नाम अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे था। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट और एक स्पोर्ट्समैन थे। Hemingway was known for his writing profound with aphorism. By aphorism, we mean to write something in condensed form or to write something in brief form. उर्दू में हम इसको जामे लिखाई भी कह सकते हैं, या अगर कोई चीज़ इख्तिसार से लिखी गई हो तो उसको हम एफोरिस्टिक राइटिंग कह सकते हैं। Moving towards the background of iceberg theory, Hemingway developed the style as a result of being a journalist, a profession which requires conciseness, briefness, due to space restraints and printed newspapers. Moving towards the unique nature of an iceberg, कि अर्नेस्ट हेमिंगवे को इस आइसबर्ग में ऐसी कौन सी खूबी देखने को मिली? The word iceberg is a partial loan translation from the Dutch word ijsberg, literally meaning ice mountain. And as we all know, that up to one eighth of the whole iceberg is clearly visible above the surface of water. And exactly this symbolic concept has been plugged in by Ernest Hemingway in his works, and that is what he calls iceberg theory or theory of omission. By omission, we mean to omit something, to skip something, or to cut short something. And his this minimalistic and symbolic approach to the world of literature really bloomed his contributions in the unending spheres of literature. और इसी टेक्निक की वजह से एक राइटर अपनी रीडर के साथ एक बॉन्ड बना पाता है, और इसी बॉन्ड में वो अपनी रीडर को कंपेल करता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग के बिना पर कंक्लूड कर सके कि इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है और इस स्टोरी में क्या कुछ हुआ। In addition to this, he furthers his stance by saying that a good writer does not need to reveal every detail of a character or action. If it is so, then it is mere description. Sometimes in literature, less is more. Hemingway said that only the tip of the iceberg to be shown in fiction. Your reader will see only what is above the water. And that is the reason Hemingway's stories presented only a small part of what actually happened. And according to Ernest Hemingway, if a writer omits something because he does not know it, then there is a loophole in that story. The story will never ever be called a complete one. Hemingway's biographer Carlos Baker believed that as a writer of short stories, Hemingway learned how to get the most from the least and how to prune language. Prune का वही मतलब है एफोरिस्टिक राइटिंग जब की जाए और इख्तिसार से और जामे अल्फाज में जब कोई चीज़ लिखी जाए उसको हम प्रूनिंग लैंग्वेज कहते हैं, टू मेक द लैंग्वेज ड्राई और टू कन्वोल्यूट द लैंग्वेज। जब ढेर सारे ख़यालात को चंद ही अल्फाज में लिखना पड़े तो ये एक राइटर के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, और यही स्पेशलिटी थी अर्नेस्ट हेमिंगवे की कि वो बहुत से आइडियाज़ को बहुत कम वर्ड्स में लिख पाते। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।